we will be studying about what do we mean by statistics for 9th standard. So this video we will be discussing what do you mean by statistics and how the day-to-day life problems can be solved by using statistics. So statistics, I can say it is the most important tool which we are using nowadays and बहुत पहले से भी यूज होता आ रहा है, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है हम सभी चीज़ों में, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी जहाँ पर भी जो भी वर्क चलते हैं वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती ही है. तो दिस इज़ एक्चुअली एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स. बट आप जैसे बड़े बड़े जगह पर देखोगे तो यू कैन हैव अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच फॉर इट. वी हैव different branches which is specially working for the statistics, only for the statistics. So ये इतना बड़ा फील्ड है कि जो कि एक छोटा सा पार्ट है आपको इधर समझाने के लिए मैं बता रही हूँ. So that is like we have a number of things which is dependent on stats which we tell. आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते आ रहे होंगे कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, वो हम आज के वीडियो में समझेंगे कि what does actually statistics means. So स्टैटिस्टिक्स वर्ड समझ करके, सुन करके आपको ये कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पे यूज हो सकता है. सो लेट अस हैव एन interactive session for this video and we can understand where all we can use the statistics and how we can use it. So एकदम बेसिक जो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की वो ये बताती है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मीनिंगफुल डाटा. क्या बोल रही हूँ, वर्ड्स के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ है. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा इज नथिंग बट अ स्टैटिस्टिक्स विच इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. द स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड कहीं से भी अगर यदि आपको एक मीनिंगफुल डाटा का एक्सट्रैक्शन होता है तो वो डाटा इज कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी एनालाइज्ड एंड दैट थिंग, जो 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, उसी चीज़ को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ वी कैन गो थ्रू इट. सो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा, द डाटा, व्हाट डाटा, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ डाटा. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यदि आपको किसी भी चीज़ का डाटा दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बताती हूँ, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, यू हैव 30 किड्स इन योर क्लास एंड they are all giving the exams. सभी के नंबर आते हैं, सभी के मार्क्स आते हैं. So you have like the paper is for 50 marks. So the highest the person can score is 50 and the lowest the person can score is 0 because without negative marking. So if the person can score 0, the lowest thing he can score is 0 and the highest thing he can score is 50. And उसके बीच में रेंज करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अलग अलग मार्क्स मिले होंगे. So that is a meaningful data which I am extracting from a one particular class. तो एक पर्टिकुलर क्लास से मैंने वो डाटा ले लिया, बच्चों के मार्क्स ले लिए. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के ही मैंने 30 बच्चों के नंबर ले लिए एंड दैट इज द डाटा. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कलेक्टिंग. सो कलेक्शन ऑफ द डाटा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कलेक्टिंग द मार्क्स फॉर द 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ रिस्पेक्टिव क्लास. नाउ ये जो कलेक्शन हुआ डाटा का, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. व्हाट वी डू इज वी ऑर्गेनाइज इट. वी ऑर्गेनाइज इन इट सम फैशन. How we organize we will be seeing in the further videos. Actually it comes how the statistic behaves. So हम उस collection को organize करते हैं. हमारा flow क्या है statistics का, हम ये समझ लेते हैं. इधर collection किया, organize किया, ये जो organized data है, this is the data which is in organized form. Now this data is analyzed. This data is analyzed. By analyzing the data, we can say that कि ये इतने बच्चे हमारे क्लास के टॉपर्स हैं, मीन्स फर्स्ट 5 हैं, एंड ये बच्चे हमारे क्लास के लास्ट 5 हैं. सो बाय व्हाट वी डू, वी कलेक्टेड द डाटा. हमको सारे डाटा मिल गए, 30 बच्चों के मार्क्स मिल गए. वो 30 बच्चों के मार्क्स को, वो डाटा को मैंने ऑर्गेनाइज किया. आई कैन ऑर्गेनाइज इट एनी फॉर्म. अभी मार्क्स हैं तो आई कैन ऑर्गेनाइज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. And then I can analyze from the organized data my top 5 and my last 5 of the class. So this is how the statistics actually work. ये छोटा सा एग्जाम्पल था क्लास का. अगर यही मैं बड़ी इंडस्ट्रीज में जाऊँ जहाँ पे कुछ अच्छा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो लोग भी यही प्रोसेस से जाते हैं. द प्रोसेस रिमेन्स द सेम बट द नंबर चेंजेस. Here the number was 30 students. There the number may be in lakhs, may be in crores. So the number changes. And
आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साइट्स पर एंड इन द न्यूज चैनल, व्हाट वी डू इज, ये एनालिसिस हो गया, एनालाइज कर दिया मैंने। अभी जैसे मैंने बोला मेरे टॉप 5 स्टूडेंट्स को पहले को मिला 48, दूसरे को मिला 47.5 एंड सम गॉट 46 एंड 45 लाइक दैट। ठीक है, ये मेरे टॉप 5 वाले स्टूडेंट्स, टॉप 5 वाले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये स्कोर किया। नाउ ये एनालिसिस मैंने इधर से निकाल लिया, ये एनालिसिस को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? सो द मेन इंपॉर्टेंट टर्म, द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट वेदर स्टैटिस्टिक प्लेज अ मच रोल कि हम चीजों को एनालाइज तो कर लेते हैं पर लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। बाय स्टैटिस्टिक्स वी कैन रिप्रेजेंट, आपने छोटी क्लासेस में बार ग्राफ्स पढ़े होंगे, हिस्टोग्राम्स पढ़े होंगे, हम इधर भी पढ़ने वाले हैं। अगेन वी आर गोइंग टू सी द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट in the form of a graph. All the analyzed data can be represented in the form of graphs. So it can be a bar graph, it can be a histogram, it can be a frequency polygon, it can be a pie chart. So number of things which we have. So these are the things, how the 4 steps which are mainly I can say which is taken in the field of statistics to analyze it. So the things start from the collection, organization, analyzing it and the representation. So this is the chain which we have to go through and need to represent. We can represent in the form of graphs, and graphs can be in the form of, it can be a bar graph, it can be a histogram, it can be a frequency polygon. What the word frequency means I will explain you. Frequency polygon हो सकता है या पाई चार्ट हो सकता है, और भी बहुत तरीके के चार्ट्स बनते हैं जो कि हम लोगों ने देखे होंगे। बहुत सारे टाइम आपने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा कि ग्राफ जा रहा है, एंड दैट इज ऑल व्हाट वी हैव, व्हाट बेसिकली द स्टैटिस्टिक्स मीन्स ऑफ। सो एज आई टोल्ड यू, इट इज एन एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा। नाउ यहाँ पर अगर यदि मैं कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करती हूँ, जो कि मेरा पहला स्टेप है स्टैटिस्टिक्स का, इट कैन बी अ 2 टाइप ऑफ कलेक्शन. It can be a primary collection, it can be a secondary collection. So what do we mean by primary collection and the secondary collection? The primary collection and secondary collection. So what does this terms actually means? So we can say that the primary collection of a data वो डाटा है जो कि हमको हमारे ही चीजों से मिल रहा है. The source is ourselves. So that is nothing but the primary data, and secondary data is which we are getting from the another source. For an example, अगर industry से कुछ data आ रहा है, that is a secondary data, which we have secondary data. तो इतना सब कुछ manufacture हुआ नहीं हुआ, that comes into secondary data. So the collection can be in the form of primary or it can be in the form of secondary. So I hope the steps which have been taken in the form of statistics to explain what the statistics actually means must be clear. Now as we understood what statistics actually means and how it works, so the 4th step which we have, that is collection, organization, analysis of the organized data, and then the presentation of it. Now we have some sort of terms which are related with the statistics. Let's see one by one. रॉ डाटा किसको बोलते हैं? रॉ डाटा एक वो डाटा है जो कि आपको इनिशियल फेज में मिलता है, कलेक्शन के समय जो आपको डाटा मिला उसको बोलते हैं रॉ डाटा. रॉ इज लाइक कच्चा, जो कि अभी जो डाटा को आपने कुछ किया नहीं है, आपको जस्ट अभी डाटा मिला है, आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, आपने ऑर्गेनाइज किया नहीं है. सो दैट डाटा विच हैज बीन कलेक्टेड बाय यू इज नथिंग बट द रॉ डाटा. सो द टर्म रॉ डाटा मस्ट बी क्लियर. रेंज किसे बोलते हैं? रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर. सपोज आपने कुछ डाटा कलेक्ट किया एंड दैट वाज द नंबर 2, 5, 8 एंड आई कैन से 12. सपोज this is already in the increasing order I have put it down. So the lowest number is 2 and the highest number is 12. So the range will be the difference of lowest and highest, that is 10. So the range is nothing but the difference of the highest value and the lowest value gives you the range. Then what do we mean by frequency, which is a very important term when we come to statistics part. Frequency एक ऐसी चीज है कि जो कि हमको मालूम होना बहुत जरूरी है.
फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली द थिंग्स आर गोइंग ऑन. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमने 30 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया था, उनके मार्क्स कलेक्ट किए. सपोज 50 में से 40 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए. सो वी हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 के कितने स्टूडेंट्स थे? 5. सो वी हैव 5 स्टूडेंट्स विच आर having 40 out of 50. So the frequency for having 40 marks is 50. How frequently the 40 is occurring in the class. So frequency is nothing but how frequently the same thing is going to be done. किसी भी चीज को एक ही जैसा करने का तरीका कितनी बार यूज किया जा रहा है, how frequently it is done, that is nothing but told by the frequency. अभी एक ही क्लास में 40 नंबर 5 बच्चों के भी आ सकते हैं, 10 बच्चों के भी आ सकते हैं, तो कितना फ्रीक्वेंटली वो डाटा रिपीट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. नाउ आई कम टू द क्लास इंटरवल्स. Class intervals are nothing but the intervals which we have. For an example, if I tell you 10-20 and this is my data, if I have a class intervals 20-30, 30-40 and so on. So this is the interval. 10 to 20 के बीच का जो रेंज है उसको बोलते हैं इंटरवल्स. सो ये एक क्लास है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लास इंटरवल. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय क्लास साइज एंड क्लास विड्थ, उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ क्लास. 10 to 20 एक क्लास है, तो कैन वी सी दिस इज द अपर क्लास लिमिट, this is the upper class limit and 10 is the lower class limit for this class. For this class, 20 is the upper class limit and 10 is the lower class limit. Now, what do we mean by class size? Class size किसको बोलते हैं? Class size is nothing but that is upper class limit minus lower class limit. Upper class limit minus lower class limit. So in that case, we will have 20 minus 10, we will get 10 for this data. It can be any data. This just as an example. तो ये सारी टर्म्स हैं जो कि हमको फ्रीक्वेंटली स्टैटिस्टिक्स पढ़ते समय लगती हैं एंड एक्चुअली इनका यूज होता है कि हम लोग कैसे सम्स को, कैसे वो जो हमारे को कलेक्शन हुआ डाटा है उसको हम कैसे देखते हैं. So first of all, to represent all these things in the upcoming videos, we will be seeing how we can use the frequency and वो frequency के tally marks कैसे बना सकते हैं and how we can represent a given data in an organized fashion in the form of bar graphs, histograms and frequency polygons, which is there in your syllabus for the 9th standard prescribed syllabus. And we will be seeing how we can deal with mean median mode and what is the importance of mean median mode and how it can be used in day to day life problems too. So statistics एक बहुत छोटा पार्ट आपके बुक में दिया हुआ है, बट लेकिन वो उतना छोटा नहीं होता. इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टूल आई कैन से फॉर डे टू डे लाइफ विच इज़ बीइंग यूज्ड नाउअडेज. एक्चुअली इट इज़ बीइंग यूज्ड very popularly, it is used I can say, and it is very important tool which gives you a lot of information and lot of forecast can be done with the help of the statistics data which you are collecting actually. So I hope the statistics, the basic of statistics must be clear from this video, and in the upcoming videos we will be seeing how we can solve the sums by using all these terminologies, plus how we can represent our data and many more things like I said about the mean median mode and all. So I hope you must have liked the information about the statistics and you must have enjoyed it. Hope so मैंने बोर नहीं किया होगा. Thank you and have a nice day. And if you liked it, please like, share and subscribe. Bye bye.